Hello, my dear student. Welcome to the subject name is Business Environment. Today we are going to discuss last topic of Unit 4, that is Sustainable Development. To start, let's begin with the topic. This is the references part. Now, what do you meaning by the sustainable development and the triple bottom line? The concept of sustainable development was described by 1987 Brundtland Commission. The Brundtland Commission has described the word sustainable development in its report. And this report says that sustainable development is basically a development that meet the need of present विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स. तो ये एक ऐसा डेवलपमेंट है जिसमें कि प्रेजेंट की नीड को सेटिस्फाई करना है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर जनरेशन नीड. तो फ्यूचर जनरेशन की नीड को बिना कॉम्प्रोमाइज किए हुए प्रेजेंट की नीड को सेटिस्फाई करना है. दिस इज ऑल अबाउट द sustainable development. When we're talking about the sustainable words means bearable, or you can say capable of being continue at certain level. तो that means sustainable. तो कोई भी चीज लंबे समय तक जब चलती है, it means that capable of being continued at a certain level, that it means sustainable. And development means growth. So when we able to when that kind of a development which is capable of being continue at a certain level, that development is known as sustainable development. And sustainable development में हम ऐसा डेवलपमेंट करते हैं जिसमें कि प्रेजेंट की नीड को सेटिस्फाई करते हैं. Now, talking about the sustainable development is targeted at finding strategies to promote economical and social development in way that avoid environmental degradation, over-exploitation, pollution, and often known in business as a triple bottom line. So it means that when we're talking about the sustainable development बेसिकली इसका जो टारगेट होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टारगेट होता है कि ऐसी स्ट्रेटेजी को फाइंड आउट करना जो कि प्रमोट करे इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट को, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को इकोनॉमिक ऐसी स्ट्रेटेजी है, इकोनॉमिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसी स्ट्रेटेजी है जो कि फाइंड आउट करती है कि इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट को हम प्रमोट करें विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट को बिना हार्म करते हुए ऐसा डेवलपमेंट करें जिसमें कि हम सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, प्रमोशन हो without harming the environment. Or you can see there is a circle. This is a social circle, this is a environment, and this is economic, and all three circle meet there, and this point is known as sustainable level, where the some part of the social, some part of a environment, and some part of economical combined together, and this part is known as sustainable. तो इस kind का development करना जिसमें एक social economical development हो without harming the environment, या without without harming the environment, without environment degradation, over exploitation and pollution, बिना environment को harm किए हुए करना. Or this condition is often known as triple bottom line in business, or you can say that people comes from social, profit means come from economical, and planet means environment. तो business में जब हम ऐसा डेवलपमेंट करते हैं जिसमें कि हम पीपल को फोकस करते हैं, प्रॉफिट को फोकस करते हैं, एंड प्लैनेट मीन्स इन्वायरमेंट को फोकस करते हैं, ऐसे डेवलपमेंट को बिजनेस में कहेंगे ट्रिपल बॉटम लाइन. Now moving toward the core element of the sustainable development. Core element means what are the main important element of sustainable development. There are basically three type of element of sustainable development. But the first one is economic growth, social inclusion, and environmental protection. And social sustainable economic growth, achieving sustainable livelihood, living in harmony with nature, and appropriate technology are most important for sustainable development. Environmental sustainability क्या हुआ, economic sustainability, तीन एलिमेंट इकोनॉमिक्स सस्टेनेबल एंड डेवलपमेंट में आते हैं. एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, सोशल सस्टेनेबिलिटी, एंड इकोनॉमिक.
Environmental sustainability means prevent the nature from being used as an inexhaustible source of resources and ensure its protection and rational uses. Environment का sustainable use करना है and aspect as a environmental conservation, environment को conserve करना है, investment करना है renewable energy में, renewable energy are those energy which can be renew, save water करना है. तो इन्वायरमेंट को ध्यान में रखकर आप जब डेवलपमेंट करते हैं, दैट इज अ सस्टेनेबल इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल. सोशल सस्टेनेबल इट मीन इट फॉस्टर द जेंडर इक्वालिटी, डेवलपमेंट ऑफ पीपल कम्युनिटी एंड culture to achieve high reasonable fairly distribute quality of life, healthcare and education across the world. So when we make such type of development which is related to the social, which increase the social value, which help to increase the development of a people community, it basically related to the social sustainability. And economical, it means it focus on the equal economic growth that generate wealth for all without harming the environment. Means हमें we that kind of a development where we create or increase the profit without harming the environment. तो profit earn करना है मगर बिना environment को harm करते. This is basically 3 type of sustainability which are the core element of sustainable development. What is a sustainable development goal? To promote the kind of development that minimize the environmental problem. Sustainable goal का main motive यही होता है कि ऐसा डेवलपमेंट को प्रमोट करना जो मिनिमम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन करे एंड टू मीट द नीड ऑफ एग्जिस्टिंग जनरेशन without compromising with the quality of environment for the future generation. Present need को satisfy करना है without compromising the quality of environment for future generation. बिना future generation की environment की quality को बिना compromise करते हुए present need को satisfy करना ही sustainable development goal है. There 3 bottom line. I've already told about the 3 bottom line, basically related to the business, where we concern about the profit, society and the environment or means planet. तो यहाँ people, planet and profit. People is basically related to the society, planet related to the environment and profit related to the economic, and this terminology used in business. Now moving toward the example part. When we talk about the example of sustainable development, let's take an example of wind energy. Wind energy is basically generated from the renewable source of energy. विंड क्या है? एक तरह की रिन्यूएबल सोर्सेज एनर्जी है जिसको हम बार बार रीजनरेट कर सकते हैं. विंड से जब भी हम विंड को हार्नेस करके विंड से जो भी एनर्जी निकलती है, हवा से जो भी एनर्जी क्रिएट होती है, दैट एनर्जी इज बेसिकली क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी फॉर द जनरल पब्लिक. तो यहाँ पर प्रैक्टिकली व्हाट इज अ प्रेजेंट नीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना मगर बिना फ्यूचर की जनरेशन की नीड को कॉम्प्रोमाइज किए हुए, मीन्स फ्यूचर जनरेशन में कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ेगा. हम विंड एनर्जी का यूज़ करेंगे. विंड एनर्जी एक ऐसी रिसोर्सेज है जो रिन्यूएबल है. रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लो कॉस्ट होती है और नो पोल्यूशन होता है. तो इट मीन्स इन्वायरमेंट को भी हार्म नहीं होगा. तो ऐसा आप डेवलपमेंट कर रहे हैं जिसमें कि आप नीड को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की नीड को, आप उसमें इन्वायरमेंट को हार्म भी नहीं कर रहे हैं और फ्यूचर जनरेशन को कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं कर रहे हैं उसकी चीज़ों से रिलेटेड. तो फ्यूचर जनरेशन को ईजिली एनर्जी मिल जाएगी without compromising the environment. Now moving toward the solar energy. Solar energy is also energy that comes from the sun, and solar energy also kind of a renewable energy which create no pollution. And it means that solar energy is a basically kind of development where we satisfy or we fulfill our present need that is related to the electricity. और ये renewable source of energy है without harming environment और present need को satisfy कर रहा है. तो ये सोलर एनर्जी इज अनदर एग्जांपल. ना रोटेशन ऑफ क्रॉप. आपको पता है कि जब भी हम कोई क्रॉप की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहते हैं तो हम फर्टिलाइजर का यूज करते हैं. एंड हियर रोटेशन ऑफ क्रॉप इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू chemical free way to maximize the growth of potential of the gardening. So here we can say that it's a kind of sustainable development of the crop without harming the environment or without harming the फ्यूचर, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर नीड्स. तो फ्यूचर नीड्स में जनरेशन को बिना हार्म किए भी आप इसको क्रिएट कर सकते हैं. तो ये एग्जांपल रहा. नाउ टॉकिंग अबाउट द, अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं या सस्टेनेबिलिटी चेंज अगर हम किसी बिजनेस में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो व्हाट काइंड ऑफ स्टेप द बिजनेस कैन
implement in sustainable change, like location and design. The business can use different kind of location and design as per the uh, sustainable changes. Choose a location with good transportation infrastructure, जो जिससे कि pollution कम होगा. Central to urban area with wide range of route. And in warmer climate, the building can take advantage of solar panel for the inside. तो solar panel का use कर सकते हैं, जिससे कि electricity consumption आपका आप भी हो जाएगा, एंड विदाउट हार्मिंग एनवायरनमेंट आप सोलर एनर्जी का यूज कर सकते हैं. एंड यूज ऑफ द क्लीन एंड इनोवेटिव मटेरियल दैट आर लो हार्मफुल एमिशन आर ड्यूरेबल एंड नॉन टॉक्सिक. फॉर द एग्जांपल, ये हुआ लोकेशन एंड डिजाइन. अगर हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं सस्टेनेबल चेंज इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी सम काइंड ऑफ पॉसिबल सेंसर डिटेक्टर व्हेन पीपल आर इन रूम और नॉट. और इससे क्या होगा, एनर्जी कंजम्पशन जो होगा वो क्रिएट आप कम कर सकते हैं. नाउ वेस्टेज शुड बी सॉर्टेड आउट अकॉर्डिंगली. पेपर शुड बी यूज और रिसाइकल यूज करें, बार बार पेपर को रिसाइकल फॉर्म एंड रीयूज करें. प्रिंटेड तभी निकालें जब आपको बहुत नेसेसरी हो. पेपर का यूज कम से कम करें. ईमेल एंड अदर कम्युनिकेशन शुड बी इन email format. And the purchase of rechargeable battery more beneficial than the non rechargeable alternative का use करें. Disposal of battery in the appropriate manner so it not create any kind of pollution or environmental pollution. Water, अगर हम वाटर की बात करें तो सेंटर वाटर टैप होते हैं which save the money as well as the water, and we can reuse the rainfall water in another sustainable action which should be utilized by the individual and company. और रिजर्वेयर बना के आप रेनफॉल वाटर को कैप्चर करके you can use and reuse that kind of water. So these basically are kind of a step the business can implement for sustainable change in the business. So this is all for today now. Thank you, my dear student.